नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Okay, so the dua that generally people recite before giving any lecture, that's attributed to Musa alayhi salam, right? And you discussed the story of Musa alayhi salam outside, right? Did you discuss his encounter with Pharaoh? No. You just discussed the event of Musa alayhi salam and Khizr, right? That's all. Okay. So today, inshallah, we are going to talk about tawakkul. Tawakkul is an Arabic word which means that you entrust someone, okay, or you put him in charge of your matters, or you rely completely on him, okay. So, for instance, when the driver is driving, do you trust his abilities or not? You generally you do, right? Okay, but some of the times the driver is driving and you also get a sleep, right? Because you're very tired and you know the driver has his duty to drive the car safely and to make you reach the destiny or the home or the school, right? And similarly, when a pilot is flying the plane, do we trust his abilities? Or do we just get up and we go to the cockpit and we say, "Oye, kaise chala rahe ho tum?" Do we do that? We don't do that, right? Because we trust his abilities. Yeah, but generally, whatever the scenario is, we know that he's someone who is capable and his job is to ensure our safety. So, tawakkul in Allah means that you have to rely only on Allah, right? So, just like you trust the ability of the driver or of the pilot, we know that Allah subhanahu wa ta'ala is the supreme, right? He's the authority. So, when Allah subhanahu wa ta'ala is supreme and He is the authority, it is our utmost duty to trust Allah. So sometimes in our life, when we are going through rough times or rough patches or some dark area, so like maybe someone flunk, or maybe there's a fight of parents going on at home, or there's something that we don't like. So what can we do? We can just be patient, because not always you can do something. There are a lot of things that you can't do something about. So for instance, someone got fractured. So someone who got fractured or someone who got cancer, right? What can we do? In the end of the day, we have to trust Allah subhanahu wa ta'ala, right? Okay, so tawakkul is a matter of heart. So Imam Ahmad, he's a very big scholar. He says that tawakkul is the action of heart. It's not the action of words or limbs. तो मैं ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला मुझे आप पे बहुत ज़्यादा तवक्कुल है, आई रियली ट्रस्ट यू अ लॉट, राइट, लेकिन मेरा हार्ट उसको एक्सेप्ट ना कर रहा हूँ, ठीक. सो इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट इज़ दिस मैटर ऑफ? इट्स अ मैटर ऑफ heart. So Allah subhanahu wa ta'ala कहते हैं कि Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala loves those who trust him. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala really loves those people who really trust him. And Allah subhanahu wa ta'ala not only tells that, Allah subhanahu wa ta'ala has also ordered us to trust in him. So Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Maida that put your trust in Allah if you are believers indeed. So what are the benefits of putting your trust in Allah? One of the greatest blessing of trusting in Allah is that Allah subhanahu wa ta'ala knows the entire picture and we can just see a pixel. Just like in the story of Musa and Khizr, there were a lot of things happening whom no one could understand. Okay, so apparently something could go wrong in your life, but you don't actually understand the hikmah behind it, right? So just like Yusuf alayhi salam, we all studied the story of Yusuf. He was thrown into the well. Had he stayed with his parents, he would have never become never become a minister, right? You have heard the story of Musa alayhi salam in detail, of Yusuf alayhi salam. So कई दफ़ा हमारी लाइफ में ऐसा काफ़ी कुछ हो रहा होता है which we can't understand. So for instance, आप देखते हो कि पाकिस्तान टीम मैच हार गई, हम उन्हें गालियाँ दे रहे होते हैं, कैसे मैच हार के, ठीक है.
लेकिन you don't know the reality, you don't know what was Allah's plan. When we lost from India, हम सारे क्या कह रहे थे, बस यार ये तो फाइनल में नहीं जा सकती, ऐसी की तैसी. But Allah's plan is something else. So sometimes Allah subhanahu wa ta'ala gives us failure to teach us the lesson so that we can take heed from it, right? So that we can take lessons from it. So देखो ना, we trust in Allah. And one of the benefits of trusting in Allah is that Allah subhanahu wa ta'ala is going to ensure that those people who trust Him, 70,000 of them, and along with them a lot of other people are going to go to paradise without any questioning. So what are those sort of people? Ibn Abbas says the messenger of Allah said that 70,000 of this nation shall enter paradise without any question answer, and he described those people who do not ask others to treat them with ruqyah. Do you know what ruqyah means? रुकिया क्या होता है? जब आप दम करवाते हो ना लोगों से, मैं बीमार हो गया हूँ मुझे दम कर दो, होता है ना, आपके मामा बाबा भी आपको दम करते हैं. लेकिन वो 70,000 वो वाले लोग हैं जिन्होंने अल्लाह पे ट्रस्ट किया विद देयर हेल्थ, और उन्होंने दूसरे को नहीं कहा कि मुझे रुकिया कर दो, मुझे दम कर दो, मुझे कोई तावीज़ दे दो. ठीक. तो अब इसके लिए हमारे कॉल टू एक्शन क्या है कि अगर आप सिक हो जाओ, आपकी फैमिली में कोई सिक हो जाए, सो यू डोंट हैव टू फाइंड अ पर्सन जो आपका आके रुकिया करे, जो पीर साहब के पास चला जाए कि पीर साहब मेरे साथ ये मसला हो गया, मुझे बेबी नहीं हो रहा, मैं क्या करूं. तो पीर साहब को फॉलो करना शुरू करते हैं. Although some of these things are allowed in Islam, so for instance रुकिया आप कर सकते हो सूरह फातिहा का, right? But Allah subhanahu wa ta'ala liked those people because they truly and truly believed in Allah. You know, when Ibrahim alayhi salam was thrown into fire, an angel came and he said that I can protect you. But what did he say? Yes, he said that verily Allah is the one who is my wakil, who is my protector, who is my wali. तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कर दिया, उस उस फायर को काम कर दिया, और इतना काम किया कि उन्हें किसी भी तरह से कोई भी डैमेज नहीं हुआ. सो हमारी जो utmost preference है, that should be on relying towards Allah, because it has immense benefits, and one of the benefit is that Allah subhanahu wa ta'ala loves that person who believes in Him, who trusts Him. Another benefit is that if you will trust Allah subhanahu wa ta'ala, your ticket to Jannah is secure. Okay, inshallah you'll go to paradise, right? Okay, and now, you know, there are multiple ways by which we can trust in Allah, and there are multiple scenarios through which we can trust in Allah. So trust in Allah doesn't mean that you don't do your homework. So for instance, you have a maths exam and you're going there unprepared and saying, I trust in Allah. Inshallah, I'm going to get 100 out of 100, right? That doesn't mean trust in Allah, because we are also ordered to prepare. आप पूरा पूरा प्रिपरेशन करो. और इसमें ना हमें एक इसी तरह अगर आप कोई और सिनेरियो देखो, जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स ये नहीं करते थे कि बैटल फील्ड की तैयारी ना करें और वो कहें कि बैटल बस वी ट्रस्ट इन अल्लाह बिकॉज वी आर मुस्लिम्स और हमें कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं. अब जो रिजवान है, रिजवान और बाबर आजम का है, हमें कोई नेट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, वी ट्रस्ट इन अल्लाह, राइट? दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क. सो द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड दैट यू हैव टू टाई द कैमल एंड देन ट्रस्ट इन अल्लाह. अब मैं अपनी गाड़ी लॉक ही ना करूँ और उसके बाद मैं कहूँ कि गाड़ी चोरी नहीं होगी बिकॉज आई ट्रस्ट इन अल्लाह. It doesn't make sense. So you have to do entire homework. इसमें रसूलुल्लाह सल्लम की ना एक बहुत ज़बरदस्त हदीस मिलती है, and he tells us something that is very powerful, very very strong. वो क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला loves the believer who is strong more than a believer that is weak, although there is goodness in both of them. So Allah subhanahu wa ta'ala loves which kind of believers? More strong, right? अच्छा, और strength कैसे आती है? So one is the strength of faith. So someone who has more faith in Allah, he's more strong. So how many of you like Imran Khan? All of you, right? I knew. Yes, but you know, Imran Khan often says that, you know, whatever is written in my destiny, it will happen. If I'm, you know, whatever time is written for my death, I will die. Okay?
That's also courage and trusting Allah. Okay, so when there was epidemic, when there was COVID, when there was dengue, a lot of people would say, "Hi, मुझे dengue ना हो जाए, hi, मुझे dengue ना हो जाए." But that's a trust in Allah कि अगर dengue से मैंने मरना है, I will die, और अगर नहीं मरना, I won't die. You know, a lot of people died from dengue. A lot of people died from COVID. It's a reality. But why are we safe from dengue and COVID? Because it was not written in our destiny, right? In our destination, that we have to die from COVID and dengue, right? So इसी तरह some people are afraid of plane crash. वो प्लेन में नहीं बैठते कि प्लेन क्रैश हो जाएगा. यू नो जनरली आंटीज वो लिफ्ट में नहीं बैठती. हाय बेटा, लिफ्ट ना नीचे गिर जाए. Some people are afraid of heights. So it gives us a solution of our fear. So Rasulullah sallam ने क्या कहा कि both the believers, a strong believer is better than a weak believer, although there is goodness in both of them. फिर उन्होंने क्या कहा, then he told us things that we have to adapt, that we have to follow, so that our yaqeen in Allah and our tawakkul in Allah enhances. वो क्या चीज़ें हैं कि whatever is beneficial for you, you have to run towards it. Okay, so whatever is beneficial for you. So for instance, for someone, exercise is beneficial. Okay, so कुछ लोगों के लिए exercise beneficial है, कुछ लोगों के लिए पढ़ना beneficial है. आप जो भी चीज़ आपके लिए beneficial है, you have to run towards it. Okay, you don't have to lax कि हाँ ठीक है, खाना खाना beneficial है, मैं खा लूँगा 5 बजे. जिम जाना beneficial है, मैं चला जाऊँगा कल परसों. अभी पढ़ना बेनिफिशियल है, मैं पढ़ लूँगा बाद में. हिफ्स करना बेनिफिशियल है, मैं उधर जाके सेंटर में हिफ्स कर लूँगा. ओके, वट एवर इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, यू हैव टू रन टूवर्ड्स इट. तो जो भी चीज़ बेनिफिशियल होती है ना, वी हैव टू गो टूवर्ड्स दैट विथ फुल एनर्जी एंड फुल फोकस. दिस इज समथिंग दैट द हदीस ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेज. सो फॉर इंस्टेंस मेरे लिए यहाँ पर आना बेनिफिशियल है. सो हर चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है. इट्स द आवर परसेप्शन टूवर्ड्स इट. अब मेरे लिए यहाँ पर आना बेनिफिशियल है. अब मैं सुबह उठूँ, मैं कहूँ यार दिल नहीं करा जाने को, क्या फ़ायदा जाने का, बस आराम से सोते हैं. This is not the attitude that Allah likes. The Messenger of Allah said that whatever is beneficial for you, you have to run towards it. The second thing we are told to do to increase our tawakkul is to seek Allah's help. ठीक है, अल्लाह की हेल्प सीख करो, साथ साथ अल्लाह की हेल्प सीख करो, हर चीज़ में अल्लाह की हेल्प सीख करो. सो फॉर इंस्टेंस अगर कुछ मुश्किल आ रहा है, आपसे चीज़ें याद नहीं हो रही, आपसे टेनिस नहीं खेला जा रहा, टेनिस में आप बार बार हार रहे हो, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू जैद, यू हैव टू सीक अल्लाह's हेल्प. अच्छा, इसी तरह डोंट गिव अप और डोंट डिस्पेयर. हाँ ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा. ठीक है, डिस्पेरिटी में लोग आके बैठ जाते हैं, बस यार मुझसे बिज़नेस चल ही नहीं रहा, जो सा मैंने बिज़नेस किया सब कुछ फेलियर हो गया. ठीक है, और जाके सो जाते हैं. सो किसी भी तरह से कमज़ोर या मायूस ना हो. दिस इज समथिंग दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह टोल्ड अस टू डू. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग ही टोल्ड अस टू डू? यू हैव टू, what was the first thing that you have to do? This is the second thing. What is the first thing that you have to do? You have to run towards something that is beneficial. Okay, second is seek help from Allah, and third is do not despair. ये ना को ये तो मुझसे हो नहीं रहा. वो एक चूंटी थी ना, वो बार बार दीवार के ऊपर जाती रही, और जब ऊपर जाती थी गिर जाती थी. तो फिर उसने क्या गिव अप कर दिया? नहीं, वो बार बार जाती रही. अब एक बंदा जिसे स्विमिंग ही नहीं आ रही, बट ही नोज दैट स्विमिंग इज बेनिफिशियल फॉर मी, वो क्या करेगा? बार बार वो गिव अप कर देगा कि मुझसे तो स्विमिंग हो नहीं रही, मैं गिव अप कर देता हूँ. But sometimes things are too difficult, and instead of wasting your time, you should give up. Sometimes. No, you have to change your strategy. If So it's if you something exhaust all your energy and all your strategies, right, then you can decide. और अक्सर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हो तो you are able to do that, है ना. बहुत काम ऐसा होता है. आप सही कह रहे हो कि एक एग्जिट प्लान भी होना चाहिए, लेकिन इन जनरल क्या हर चीज़ का एग्जिट प्लान होना चाहिए कि मैं तो स्कूल में पास ही नहीं हो रहा, चलो ओ लेवल्स करने का क्या फ़ायदा, हाई स्कूल करने का क्या फ़ायदा, आई एम गिविंग अप. अच्छा, इफ़ यू हैव गॉट अ हार्म, राइट, a harm or a loss from somewhere,
then do not say काश मैंने इस तरह किया होता, right? So for instance पाकिस्तान मैच हार जाए, अब हम क्या कहना शुरू हो जाता है, काश बाबर आजम इस तरह खेल लेता, काश इस तरह खेल लेता। अब हमारी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हम कहते हैं बस फेल हो गए, काश मैंने पढ़ा होता, अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं फेल ना होता। ठीक, ये जो वर्ड काश है ना, दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, बिकॉज आप पूरी ज़िंदगी रिग्रेट में रहते हो। आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती, काश मुझे अच्छी जॉब मिली होती। यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर फैमिली, काश मेरे मामा पापा ऐसा ना होते, काश मैं कहीं और पैदा हुआ होता, काश मैं पाकिस्तानी ना होता, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू बाय सेइंग काश काश काश। इस तरह नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए that this was the part of Allah's taqdeer for me, this was the part of qadar, this is something that Allah subhanahu wa ta'ala has already written for me। ठीक है, ये जो काश कहना है ना, ये शैतान के बहुत ज़्यादा रास्ते खोल देते हैं। व्हेन यू से दैट आई विश आई कुड हैव डन दैट, आई विश इस तरह हो जाता, इट ओपन्स अ लॉट ऑफ गेटवे टूवर्ड्स other things। ठीक है, and this is something that is not recommended। Okay, I'm going to stop over here. Although the concept of tawakkul is very long, but I think we should take some question answers.